हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज का लेसन बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है। ये बेस्ड है एक कॉमन मिस्टेक पर जो मैंने बिगनर्स में जो कथक सीख रहे हैं या सेमी क्लासिकल सीख रहे हैं उनमें देखी है, जो है साइड टू साइड नेक मूवमेंट ना कर पाना। We are going to fix that with a very simple exercise. But before we go ahead, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, न्यूआंसेस है, डिटेल्स है, जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के साथ सीखने पर ही पकड़ में आ सकती है। एंड इफ़ यू आर अ सीरियस डांस लर्नर, डू नॉट, absolutely do not rely on videos alone. That is not a learning technique. Videos are for reference. जब आप ऑलरेडी सीख रहे हैं and you need to get reminded of certain techniques, that is when videos come in. But if you are learning from scratch, do not rely on this one way interaction. Please get in touch with a mentor, a teacher, and get yourself enrolled in a dance class. You may contact us with the link in the description below or the WhatsApp number given below. Now, coming back to our lesson, a very simple exercise to determine if you are doing the side to side neck movement correctly. How do you do that? Place both your hands to the side of your face. बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए दोनों हाथों की। इसको साइड टू साइड प्लेस करेंगे। मेक श्योर इट इज विद इन द रीच ऑफ योर फेस, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कि आप मूवमेंट कर पाए उसके अंदर, आपकी नेक मूवमेंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई एंड हिट द लोअर पार्ट ऑफ योर फेस और योर चीक टू द साइड which is towards your hands, which will go like this: 1 and 2 and 3 and 4. Why is this an exercise? I'll tell you. अगर आपका upper part of the cheek आपके हाथ पर hit कर रहा है, it means you're moving your head, not your neck. So if you're doing this, ये वाला part पहले touch करता है आपके चेहरे का आपके हाथों से, which means you're doing it wrong. The other part which can go wrong is the head. So make sure that you feel the lower section of your cheek or your face hitting your hand, which means you are using your neck actively. You will definitely feel it in the muscles right here that are towards the side and the back of your neck. Now, one more thing that you need to understand while doing this exercise is to do it in front of a mirror. Why? Because you should constantly be able to see your eyes and your nose in the center. अगर वो हल्का सा भी डिफ्लेक्ट हो रहा है सेंटर से, it means you are moving your entire head. This is a head movement, not a neck movement. If it is a neck movement, your eyes and your nose stay in the center all the time. आप constantly सामने देख रहे होते हैं while only your neck is moving side to side. These are a few tips that you can adhere to while doing this exercise. Now, when you're doing it with the context of Kathak, you'll most probably use it even when you're holding an utpatti. Just for the sake of exercise, try to also coordinate your wrists, your kalai with your neck. Okay? एक simple नाधिन धिन्ना का थेका चला दीजिए, which is त्रिताल, and you can do ना, धिन, धिन, ना, ना, धिन, धिन, ना, ना, तिन, तिन, ना, त्रक, धिन, धिन, ना, ना। इससे क्या होगा? Your neck will learn to coordinate with the rest of your body, with the rest of the nuances that happen in your body. इसके लिए आप जब आपके डेली एक्सरसाइजेस में हस्तक करते हैं, फुटवर्क करते हैं, उसी तरह से नेक मूवमेंट्स, ब्राउ मूवमेंट्स, ड्राइंग शार्प लाइंस विथ योर नोज,
इस सब की एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करना डेली प्रैक्टिस या रियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट वाज क्लास फॉर टुडे। आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो अ कॉमन इंक्वायरी दैट आई गेट, which I want to hammer in your heads right now, is that how are your classes different than your tutorials? Darling, it's an entirely different vertical. I do not get to see you dance. I do not get to interact with you. I do not get to share my insights with you personally. I don't know what looks the best on your body type. I do not know uh, how exactly to talk to you via videos in a way that you will understand the best. Effective communication के लिए one on one बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Dancing is a live art form. Do not confuse it with something that you can learn via just videos. All right. So if you are at all interested in learning dance, then make sure that you enroll in dance classes. Do not depend on videos. Even if they are my videos, I do not recommend you depending on videos alone. All right. I hope you understand and take my advice seriously and enroll in our classes ASAP. And until then, see you.